नमस्कार. प्रुडंटाच्या या खासा कार्यावळीन तुमकां येवकार. सध्या पणजेन सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल सुरू आसा. 22 परस चड व्हेन्यूंचेर हे सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल सुरू आसा आनी ह्या व्हेन्यूंचेर एक्झिबिशनां जावं, एक्टिविटीज जावं वा डिफरंट प्रोजेक्ट सुरू आसात. सो ह्या 22 परस चड व्हेन्यून मदलो एक व्हेन्यू म्हळ्यार ओल्ड GMC बिल्डींग. सो हांगा आशिल्ले द एली एक्झिबिशन, ह्या एक्झिबिशनाक भेट दिवपाक आयज आमी आयल्या. सो ह्या एली एक्झिबिशनान नक्की कितें डिस्प्ले केला गेला तें आमी ह्या खासा कार्यावळींतल्यान आयज जाणा जावन घेतली. सो आमी आसा एली एक्झिबिशनान आनी ह्या एक्झिबिशनाची क्युरेटर देबरती रॉय आयज आमच्या वांगडा आसा आनी ताच्या कडेन उलोवन हें एक्झिबिशन नक्की म्हळ्यार कितें आसा, कित्याक ही आयडिया आयली सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलान हें एक्झिबिशन दवरपाची, ह्या विशयी ताच्याच कडल्यान अदीक जाणा जावन घेवयात. We have curated this in space which is India's first art and fashion space and यहाँ पे हमने सारे ब्रांड्स को एक अपना मौका दिया है कि वो टेक्सटाइल आर्ट, क्योंकि वो उनका आर्ट होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स का आर्ट होता है, वो कोई स्पेस मिलती नहीं है, तो वो स्पेस वो क्रिएट करके दिए हमने फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे डिज़ाइनर्स नॉट जस्ट फॉर सेलिंग बट ऑल्सो टू टेल पीपल व्हाट इज़ देयर स्टोरी, व्हाट इज़ देयर नैरेटिव, व्हाट इज़ देयर ईथॉस. वो जगह कोई उनको मिलती नहीं है बोलने के लिए, स्पेसिफिकली स्मॉलर ब्रांड्स को. तो वो चीज़ें हमने एक जगह क्यूरेट करी है लोगों के लिए, जो for the first time it's called the alley and we aim to do bigger and we want to take alley to different places now. So this is Tarini and Tarini is a brand from Delhi essentially, but they also are in Goa now. What they've done is they've curated a Christmas home and each product you see in this home is something that you can buy. आप कुछ भी खरीद सकते हो इस क्रिसमस हाउस से एंड एवरीथिंग इज़ सो वेल प्राइस्ड दैट कोई भी आके यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है. यू नो दे डू द प्योरेस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर एंड it is just the most beautiful curation of home and textile together. This is Studio Veranda. This is essentially a collection Anjali Patel is showing for the first time. It's inspired by Sri Lanka. It's called Bentota. Even these shells, even this jewelry is from shells in Sri Lanka. So there is, and what she's done is each wall that you see is a print by her, and then there is the collection right underneath. So if you can see, there's this whole space is actually inspired by art and then her textile. So that's the beauty of the space. Yeah. This is No Nasties. No Nasties is India's biggest sustainable brand. They're actually carbon negative, and what they've done is they've curated the space where they want to show you that how beautiful clean and clear air is and how much can a product like clothing contribute to clean and beautiful environment. So that's their whole idea, and they're not just a fashion brand was the narrative. Now these brands, इनको ना जगह नहीं मिलती है कहानी बताने के लिए अपनी, तो वो जगह हमने क्यूरेट करके फेस्टिवल में दी है कि आर्ट के ऑडियंस को हम टेक्सटाइल कैसे दिखाएं. This is this jewelry brand called Neeti Neeti, and what they do is they do the most beautiful stuff that you've never seen. आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे ebony wood and silver के साथ उन्होंने jewelry create करी है. ये इनकी पूरी स्टोरी एक यंग ब्रांड को बताने को मिलती है कि कैसे वो अपना क्यूरेशन करते हैं, कैसे वो अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, कैसे वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो शायद आप इंस्टाग्राम पे भी ना देख पाए अब. This is a brand called Yam. It's by Priya Mittal. What they do is, Priya is an artist herself and she does her artwork not just as an artwork but on clothes as well. So whatever you see here is her own artwork. She's a very, very well-known artist, and these are her collections. She does the most beautiful Indo-Western fusion, Indian, but everything is art inspired, which is why she's found the space here, and she's curated the space like she calls it the Goa party, because this is actually Goan fishnets. So that's what she's done.
अर्चना शाह हैदराबाद से हैं। उन्होंने अपने प्रिंट्स को, बहुत प्रिंट्स के साथ काम करती हैं और वो आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करती हैं। ये उन्होंने अर्चना शाह आर्ट वॉल बनाई है। सो ऑल द आर्ट दैट यू सी हियर इज़ हर क्लोथ्स, बट शी इज़ प्रेजेंटेड इट इज़ एन आर्ट वर्क. So this is the whole space and that's how she's designed it. That's her very famous Pomo print, which is all over, but she's never been able to claim this as a print. So now here she wants to put it as an artwork. 1111 our star brand, Indigo में ये काम करते हैं. इनका अंदर एक बहुत बड़ा एग्जिबिट ऑलरेडी चल रहा है और अगर आप देखें तो मतलब इस पूरे एग्जिबिट की ये ब्यूटी है कि आप सिर्फ कपड़े नहीं देख रहे हो, आप इनकी कहानी, इनकी स्टोरी, इनका हर एक चीज़ आप बहुत अंदर से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट. जो आप अगर एक एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हो तो उसकी कहानी आपको नहीं पता लगती है. दैट्स वाई द स्पेस इज़ क्रिएटेड कि आर्ट और फैशन एक साथ आ जाए. ओके, सो दिस इज़ मनन. मनन इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड मनन ने एक बहुत ही ब्यूटिफुल प्रोजेक्शन करी है, आर्ट प्रोजेक्ट बनाया है, वेरिन वो आपको बोल रहे हैं कि आप स्लो डाउन कर जाओ लाइफ में, राइट. वो आप एकदम मतलब गो बैक टू योर हॉबीज़, गो बैक टू द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ जो आपको हम बचपन में, एज सिंपल एज मटर छीलना, ये बचपन में बच्चे हम सब ने किया एज किड्स. सो वो चीज़ें, फिर जस्ट मेकिंग श्योर दैट लोग जो एक फास्ट पेस फ़ोन लेट लाइफ हो गई है उससे अवे आके हम क्या कर सकते हैं. और उन्होंने पूरा एक अपना एक्सपीरियंस क्रिएट किया है विच एवरीबडी इज़ लविंग इट. आप यहाँ से अपना एक पोस्ट कार्ड ले सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को दे सकते हैं जो एक्चुअली बहुत बिजी हो गए हैं लाइफ में. इन्होंने म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बनाई है, जो आप म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक जो आप सुन सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं. ये सब कुछ आप कर सकते हैं. तो दैट्स वाई वी हैव क्यूरेटेड दिस स्पेस. आपने ऐसा स्पेस कभी देखा नहीं होगा एग्जीबिशंस में. सो ये चीज़ हमने ऐसे क्रिएट करी है. या सो एसेंशली ये इनका करके एक ब्रांड है, अमित हंसराज चलाते हैं ये. इन्होंने एक शर्ट हमारे को बना के दी है एज एन इंस्टॉलेशन जिसका नाम है लव इज़ अ वर्ब. इन्होंने शिबोरी, अगर आप देखें तो शिबोरी यूज़ करा है शर्ट में और ये लाइफ साइज शर्ट बनाई है. The idea of this project is to tell people that love is not just a feeling but you have to do work for it. तो ये जो threads use हुए हैं वो काम करके जो ये शर्ट बना है उतना ही काम आपको प्यार में भी देना पड़ता है. That's the art work essentially for you. इंडिया के सबसे most famous print brand सत्यपाल, they are also here with us. इनके latest prints, इनके हर एक piece art work ही है. if you see सारे पीसेस अलग, सारे पीसेस आर्ट इंस्पायर्ड, सारे पीसेस ब्राइट, ब्यूटीफुल, जस्ट परफेक्ट फॉर गोवा. ये इब्राहिम ठाकुर, डेविड इब्राहिम राकेश ठाकुर का ब्रांड है और इन्होंने, ये बहुत सीनियर डिज़ाइनर्स हैं. इन्होंने हमारे फर्स्ट एडिशन में पार्टिसिपेट किया. इट्स वेरी प्रेस्टिजियस फॉर अस टू हैव डिज़ाइनर्स लाइक दैम. दे हैव ब्यूटीफुल women's wear, men's wear, also small things like ceramic candles. If you cannot buy the pieces, you can take something back home from the brand. There's scarves and nobody knows textile better than them. So it is just again a beautiful effort that we all have put together to make this happen in Goa. ये ब्रांड कस्तूरी कुंडल है. ये डायरेक्टली आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं और एक एक पीस यूनिक बनाते हैं. इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शोकेस किया है जो आप जनरली एग्जीबिशंस में नहीं कर पाते हो, कि आप एक सिल्क को दूसरे सिल्क से अलग कैसे समझें. इन्होंने ककून्स रखे हैं, इन्होंने थ्रेड्स रखे हैं, इन्होंने पूरा प्रोसेस रखा है बताने के लिए कि आप कैसे सिल्क को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कौन सा सिल्क कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिल्क को कितना टाइम लगता है. सो दिस इज़ एसेंशियली द स्पेस दैट वी ऑल हैव क्यूरेटेड फॉर गोवा एंड इंडिया एक्चुअली एज द फर्स्ट आर्ट एंड फैशन एग्जीबिशन. सो आता मी येवन पावला द एली एक्झिबिशन हांगासर आनी ह्या एक्झिबिशनान आशिल्लो नेती नेती हो स्टोर जावन आसा ज्वेलरी स्टोर. आनी ह्या स्टोराचे ओनर
सोनिका तिच्याकडे उलोवन आम्ही ह्या स्टोराविषयी अधिक जाणा जाणून घेऊया. My brand name is Neti Neti and हम लोग wood jewelry बनाते हैं. हम लोग 3 types की wood use करते हैं. One is ebony wood which is dark black. We also make driftwood जो हम beaches और rivers से लेते हैं. And then there is chola wood which is this wood and ये dried skeleton wood है. एंड हम इसको सिल्वर 92.5 के साथ अमलगमेट करते हैं एंड वी क्रिएट आर्ट पीसेस विद देम. पहले हम वुड सोर्स करते हैं, उसके बाद हम उसको सिल्वर में सेट करते हैं एंड ऑल पीसेस आर हॉलमार्क्ड. एवरी पीस हैज़ अ स्टैम्प. सो या इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड इट्स वेरी सस्टेनेबली सोर्स्ड वुड एज वेल. व्हाट काइंड ऑफ मीन्स इयररिंग्स है, नेक पीसेस है और क्या क्या है? We have earrings, neck pieces, we have something for the nose pin and we have very good head pieces. Yeah, so मतलब बहुत सारी experiment कर रहे हैं हम लोग भी because we are new and we are experimenting right now. So हम लोगों की brand की शुरुआत 6 महीने पहले हुई है and this is our first exhibition basically. I think this is the best platform in India we are having for artists. एंड इधर हमें इतना एक्सपोजर है एंड यू मीट योर काइंड ऑफ पीपल एंड यू गेट टू सी योर काइंड ऑफ आर्ट. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. वी आर वेरी न्यू बट हम लोग को जिस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है फॉर आवर फर्स्ट एग्जीबिशन, आई एम रियली हैप्पी विद दैट. Visitors are coming every minute. A new visitor is coming and they are very in awe with what we are creating and they are really appreciating. So I'm really happy. क्या कहना चाहोगे, हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? That everyone should come to Serendipity who is interested in arts, who's interested in something artistic, and you will get a dose of your creativity here for sure. सो आता आम्ही असा येम या क्लोदिंग स्टोराचेर आणि ह्या स्टोराचे ओनर अमान आणि अमित आमच्या वांगडा आसा. तांच्याकडे उलोवन ह्या स्टोराविषयी अधिक जाणा जाणून घेऊया. बेसिकली हमारे ब्रांड का नाम यैम है और हम प्रिंट्स बनाते हैं जो कि हैंड पेंटेड होते हैं. फर्स्टली जैसे आप देख सकते हो ये पूरा हम ऐसे हैंड पेंट करेंगे, देन उसको डिजिटलाइज करके हम उसको लाइफ में लेके आते हैं. एज यू कैन सी आवर गारमेंट्स, दीज आर हैंड पेंटेड प्रिंट्स एंड उसको साथ ही साथ हम लोग लाइफस्टाइल में भी रखते हैं, जैसे कुशन्स हो गया एंड रनर्स, टेबल मैट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए. इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे आने से. सो अगर किसी को नहीं पता है, प्लीज़ कम टू सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल और वो आके देखें कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे कैसे काम करते हैं और कुछ नया सीखने को मिलेगा. तुमचा या स्टोरमध्ये काय रोल आहे? माझ्या स्टोअरमध्ये मी मॅनेजर या पोझिशनवरती आहे आणि चांगल्या प्रमाणे प्रतिसाद पण भेटतो आहे. इथं चांगल्या पद्धतीने लोक पण येतात आणि चांगले एक टेक्स्टाईल इंडस्ट्री आहे, फॅशन इंडस्ट्री, ज्याच्यामध्ये लोकांना चांगली माहिती देता येते. चांगल्या पद्धतीने आर्ट वगैरे आहे तेही वेगवेगळ्या पद्धतीचे आर्ट जे आहेत इंटरनॅशनल लेवलचे तेही इथे बघायला भेटतात. तर लोकांना चांगला प्रतिसाद भेटेल, लोकांना चांगली माहितीही भेटेल. आम्ही तर ह्या फेस्टिवलला पहिल्यांदाच आलो आहे, तर आम्ही पहिल्यांदा स्वतःहून पहिल्याच बघतो आहे. पण यासाठी आर्टिस्ट लोकांसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे आणि इथं त्यांना लोकांसाठी माहिती वगैरे चांगल्या पद्धतीने देता येते आणि त्याचप्रमाणे लोकांना ते माहिती वगैरे बघता येतील. काही लोकांना जी माहिती नसेल ते इथे येऊन माहिती पण भेटेल. जसे आम्ही आता करतो आहे डिझाईन, जसे आम्ही हँड प्रिंट बनवतो त्यानंतर डिजिटल प्रिंटमध्ये कन्वर्ट करतो, ते लोकांना जे पहिले काही लोकांना माहिती नसतं ते माहिती पडतं. अशा प्रकारे 2-3 दिवसामध्ये चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स भेटतो. चांगल्या पद्धतीने क्लायंट्स आहेत ते येतात, व्हिजिट करतायत, चांगले कमेंट्स येतात, चांगल्या पद्धतीने माहिती मिळते किंवा ते बायर पण असतात आणि त्यांना खूप चांगलं एक्सप्लेन करता येतं जे आम्ही काय करतोय, काय काम करतोय, कसं करतोय ते उत्तम प्रकारे आम्हाला सांगता येतात त्यांना. सो आता अजून दिवस बाकी आहेत, व्हिजिटर्स येणार आहे, सो काय मेसेज द्याल ऑडियन्सला? ऑडियन्सला सांगेल तुम्ही या, वेळ काढून या आणि बरेच तुम्हाला इथं काही नाही काही बघायला भेटेल. आर्ट्स बघायला, फॅशन इंडस्ट्रीज बघायला भेटेल, डिझाईन्स बघायला भेटतील, टेक्स्टाईलची माहिती खूप सारी मिळेल. तर तुम्ही या आणि व्हिजिट करा, बघा एकदा. प्लीज़ 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 करके यहाँ पे आइए, सेरेंडिपिटी को एक्सप्लोर करिए और कुछ नया देखने को मज़े करिए. सो आम्ही आता असा कस्तुरी कुंदल ह्या स्टोराचेर आणि ह्या स्टोराचे ओनर आरुषी आमच्या वांगडा असा.
ह्या स्टोराबद्दल अधिक त्याच्याकडल्यान जाणून घेऊया. वेलकम मैम. हेलो. सो क्या बताना चाहोगे आपके स्टोर के बारे में? Actually, we are into textiles. We do pure silk, pure mulberry silk, pure tussar silk, and we focus on the purity of the fabric and purity of the zari that we use here. And we also work in linens that we get woven in Bengal. And mostly our brand is all about the loom. We produce high quality experimental fabrics on the loom. And we have 1,500 weavers working for us, and mostly we work with the Banarsi weavers. We have bridal sarees, kind of sarees which can be worn on cocktail parties, on weddings. Any kind of mother, any sister can have the sarees for their bride's wedding. This is the first time, and it has been a great journey. I loved showing the people, the clients, what silk is. A lot of people doesn't know there are 4 kinds of silk. So I am here to showcase the cocoons, the yarns, the fabric, how it's different, how what is weaving is all about, how it is done. So I got this made as an installation. As an artist, actually, now the hand woven fabric is an art. So that's why we are here in Serendipity Art Festival, because Serendipity is all about art. So we wanted to showcase the fabrics, the luxury of the fabric as an art, because people need to know how important pure textiles are. And it's very hard to get those in this era. I think you should just visit the art festival and be amazed about all the art that is here. And most of the artists, and all of them worked so hard and came up with so many ideas and so many visions, I think. And people should come and see all that visions and what an artist want to show them. I'm Anita Iyengar, and I'm from Bangalore, and this is the first time I'm visiting Serendipity. I've always heard of it, and it's just so amazing to see so many artists here with such beautiful work, and it's very healing and also very soothing. Some of the installations inside were just mind-blowing. So it's very nice way to spend time, and I've seen a lot of young children and school students visiting, and I'm so glad they get to expose themselves to this and experience such a beautiful festival. I think everybody should visit from all ages, like mine to children, sorry. I hope one day my grandchildren also get to experience this. It's in extension to the hair service, since healing and care was a central part of the entire exhibition at Multiplay. We were thinking to do a project about massaging in a very high volatile 3-dimensional Instagram space. So a person who's fatigued after seeing so much, they'll come here and they choose a text by an author, and with a tiny excerpt of 10 minutes as an audiobook, which is to be played when you sit and get a massage. To trigger certain points of head, hand, neck. You can see if you choose to listen Arundhati Roy, The Algebra of Infinite Justice, it will trigger your lower back, and that's what the massage is about. So there are 3 massage chairs, and then people, when the participant comes, selects a poem, selects the number. Shameless by Taslima Nasreen gives you a 10 minutes of neck. The total hours is 25 minutes. So you are given a very intense neck massage, listening to her things. When you're listening to podcasts these days, we're constantly listening a very simple monotone kind of exercise. Is this all human or AI? And we normally don't really share this thing, but since she pointed out that there is an accent issue, we pointed out as well.
and we work on getting her to speak about Imroz and especially about Urdu names, which AI has never picked up till date. So we wanted to kind of just work around, but I hope it's also a joke on the technology. Also, there are physical shout out to all three women who been like relentlessly working on this exercise. कि कर क्यों नहीं हम क्यों कर रहे हैं बोलता है दीदी आप करो यार आप टेंशन मत लो 20 दे सकते हो जितने दे सकते हो मसाज 1 2 घंटे में 5 घंटे में जितना भी वो ढंग से देना let people be, you know, so that's how it is. So The artist's name is Pareen Fatima. She lives in Chandigarh. The artwork over here that is being presented is also taken, the photographs have been taken at Lake Sukna, which is in Chandigarh. The artist used to go for walks every single day to this lake, and that's where she has captured all of these pictures. So this is an interactive artwork, and her main idea is for the people who come here to also, you know, touch the water and interact with the memories that have been created here. Because I was documenting the farming crisis in Punjab. So it's basically so many cotton farmers have committed suicide in the past. In Karnataka, if you look in the last 3 years, more than 1,200 farmers committed suicide, and most of them are cotton farmers. So for me, I wanted to use cotton plants and cotton buds. So here you see like cotton plants are hanging upside down, like somebody, you know, going through hard time and struggling, and because they're uprooted and hung, so they dry every day, like they're dying every day. So and there's a cotton plants are from Karnataka, and the cotton buds are from Punjab. So these are the two states that are affected. But in the south, Maharashtra and Karnataka are the most affected. So, but still, because I'm from Punjab and I had documented from Punjab, so I wanted to bring something from Punjab and take something from the local state. So this is the thing I came up with. And then there's a film playing on the ground that explains everything. The only thing is like to visit. I think they should visit and spend time in every room, because all the rooms are very interactive and experiential. So just like read what's written in the front, and then, you know, go and spend some time in the rooms, and it's amazing. I think everyone will love it.
Lush by Devika Sundar and Nikhil Narendran, a collaboration between a visual artist and a sound artist. Devika is really interested in the kind of bodily sensations we feel, and her illustrations respond to that. Nikhil, a sound artist, has adapted the sound to match the colors and the movement of the animation and projection inside. You're invited to come, let your body be at rest, and let the music and sound do its work. So that was Lush, but this is a part of Haptic Score, an exhibition that combines sound and installation, projection. It really addresses all your senses together. So if you really thought that art is only for the visual loving people, you're wrong. Please come and visit Haptic Score and Multiplay at the old GMC building and Serendipity Arts Festival. फॅशन डिझायन टेक्स्टायल आणि आर्ट हेणी परिपूर्ण अशें आशिल्लें एली एक्झिबिशन आयज आमी पळयलें. सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाच्या निमतान आयनॉक्स कोर्टयार्डान हें एक्झिबिशन लागलां आणि ह्या एक्झिबिशनान देशभरांतल्यान विविध जे आर्टिजन्स आसा तेणी भाग घेतला, तेणी आपले आर्ट हांगा डिस्प्ले केला. मागीर ते क्लोथ्स जावं, ज्वेलरी जावं आनी हेर वस्तू ह्या एक्झिबिशनान आमकां पळोवपाक मेळटा. सो मुजरत जेन्ना तुमी सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाक भेट दितले तेन्ना हें एक्झिबिशन पळोवपाक विसरूं नाका. 22 डिसेंबरा मेरेन हें सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल चलतलें आणि ह्या येता त्या दिसांनी ह्या स्पेशल कार्यावळींतल्यान आमी ह्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाची ग्लिम्पसीस तुमच्या मुखार दवरतली. त्या खातीर पळोवंक विसरूं नाकात. प्रुडंट.